Hello learners, welcome to episode 3, Introduction to Machine Learning. Yes, with all your feedbacks, I'll be using the PPT slides now because I get some of the feedbacks in which I got to know that it was little difficult to see in mobile when we were looking at the PDFs. So this is a new way to present the data. Visualization should not be an issue, right? So let's start. Introduction to Machine Learning. So what all we learn today? We'll learn the key elements. What is the definition of machine learning? How does the working of a machine learning model does? And what are the different applications? So ये तीन टॉपिक हम आज डिटेल में सीखेंगे. मशीन लर्निंग को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मशीन लर्निंग की वर्किंग कैसे होती है और कौन कौन सी ऐसी एप्लीकेशन है जहाँ पे मशीन लर्निंग का हम लोग यूज कर सकते हैं. पहले हम जानते हैं डेफिनेशन. मशीन लर्निंग इज द फील्ड ऑफ स्टडी दैट गिव्स कंप्यूटर द एबिलिटी टू लर्न विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड. आपको याद होगा हमने इस बारे में थोड़ा शॉर्ट में डिस्कस किया था कि मशीन लर्निंग आप अगर कोई चीज़ को सीख सकते हैं, आप डेटा से ये समझ सकते हैं कि अगर ये डेटा दोबारा आएगा तो उसका क्या आउटपुट होगा. तो डेटा से सीखना, डेटा से लर्न करना, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि हम ह्यूमन बीइंग शायद अपनी मिस्टेक से नहीं सीखते हैं, बट डेटा and machine learning is a art or a science, you can say, in which like you can learn from your previous data and how it works. So this is basically the field of study in which computer are learned with the help of data again to give an output, and you don't have to program every time. Once you program a machine how to learn it, how to use a Python code, then you are done with machine learning. Let's see another definition, another outlook. Machine learning is a type of technology that allows computers to learn and improve the experience without explicitly programmed. This enables models to recognize the patterns in the data, understand the trends, analyze it, and then make decisions or predictions of their own. So see, here comes the main part, data. So let me tell you, how many of you would be investing in stocks, right? So we know there are two things in stocks. One is the pattern, how the stocks is working, the data pattern. You might not know about the company history, but if you know that there's a certain stock which has been continuously rising from last 3-4 months, you'd be tempted to put your money on that, invest on that, right? That is basically recognizing the pattern of the data. If something is falling with a pattern, then that is a falling data. We have a concept of channel in stocks, how that channel is made because of this pattern of data only. And it is said in coming days AI and machine learning will play a major role in determining the stock prices as well. So that is one of the very widely used area, not currently, but it would be definitely in the future. But not for stocks. There are other things where the pattern can be recognized. A pattern can be recognized whether a person will buy a particular product or not, whether a person will leave his company or not, right? So like you say that okay, there is a person and a company is having lot of iteration. We came to know about this problem especially after COVID, that there were many people who were leaving their companies and there were many companies who were hiring as well. सो ऐसा हम देख रहे थे कि वो एक पैटर्न हो रहा था. वो पैटर्न हम उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है कि लोग कंपनी छोड़ते हैं. पहला जो हम सोच सकते हैं मॉनेटरी रीज़न, दूसरा अगर कहीं पे टेक्निकल ग्रोथ नहीं हो रही है, तीसरा वो कोई और रीज़न हो सकता है, कोई पर्सनल रीज़न हो सकता है, लोकेशन से रिलेटेड हो सकता है या कुछ भी. सो अगर हम ये सारी चीज़ें जानना चाहते हैं, ये देखना चाहते हैं कि हम ये आइट्रेशन आगे कैसे स्टॉप करें कंपनी का, तो ये बहुत बढ़िया डेटा है. आपके पास एक डेटा रहेगा आपका पूरा 1 साल का, आप जान सकते हैं कौन से ऐसे एम्प्लॉय हैं जो कंपनी छोड़ते हैं. सो उसमें छोटा छोटा डेटा कैन बी यूज. लाइक अगर कोई एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा छुट्टी ले रहा है या कोई एम्प्लॉय जल्दी ऑफिस से जा रहा है, एंड दोज एम्प्लॉयज आर द वंस हु आर लीविंग द कंपनी लेटर, वही लोग बाद में छोड़ रहे हैं. सो ये एक पैटर्न है जिसको हमारा डेटा बहुत ईजिली एनालाइज कर पाएगा, जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन आई से शायद मिस हो जाए. सो दिस इज the different ways where the pattern of data can be used, and further it is analyzed. As I said, you analyze that which employees there to leave the company, and then you make prediction. Okay boss, I have 10 employees, now this is the one who will leave the company and 9 will stay with the company. So then you can focus on retaining that employee, right? So this is the definition of machine learning. Now let's come to the bigger picture. Bigger picture, this picture says it all. We'll discuss one by one each of these things.
what is a working of a machine learning model. So basically you study a problem. You need to know what is the problem. As I said, for an example, problem of iteration, that is lot of people leaving the company. So you know that you have certain data, people who have left in past, and they are you want to know how many people would leave in future. So you have certain data and you have to analyze whether yes or no. So in this case the problem is iteration and the output is yes or no. Let's discuss till this point here, and then when we go in future, when we discuss more what kind of problem it is, you will get to know this is a supervised learning problem, right? So now this is the problem study. Now you train a model. What is training a model? Training a model is basically you have a data set. As I said, if there are people who left in 2020, you have that data available in 2021. Now that data you will tell the model, okay, you train on this particular data. सपोज फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे आप सैम्पल पेपर सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो सैम्पल पेपर हमारा क्या होता है, जो क्वेश्चंस आ सकते हैं तो हम उसके बेसिस पे अपने आप को ट्रेन करते हैं, राइट, कि हम ये आंसर देंगे। वैसे ही डेटा अपने आप को ट्रेन करता है। जैसे यहाँ पे हम डेटा देख रहे हैं, ये नीचे जा रहा है फिर ऊपर जा रहा है, तो हो सकता है ये एक किसी चीज का पर्टिकुलर सेल का सीजन है, से ये कैलेंडर सीजन है और हम देखते हैं कि होली के टाइम पे बहुत लोग परचेजिंग करते हैं, फिर वो डाउन हो जाता है, फिर अगेन दिवाली के टाइम पे वो बढ़ता है। तो जस्ट सी दिस इज द पैटर्न ऑफ द डेटा, तो हम बोल सकते हैं ये अगले साल भी हाई चांसेस है कि ये रिपीट होगा। So this is how we train the data and train a ML model. So model is a, you can say, a system which gets into the data and it trains the data. That is what is training the model. You train it for a future. So you prepare for exam using a sample paper, the best analogy. Then you get a solution. You inspect the solution, whether that solution is working or not. So you can use the training data and you can test also on the current data only. So suppose if you are standing in 2021 June, okay, so you train your data based on 2020 model, 2020 data, and then you have data for 2021 also for 6 months. So now you don't use that data for training, you use that data to see whether what you predicted was actually came true in 2021 or not. So that is inspecting the solution, that is seeing whether that data is correct or not by the help of your test data. We'll discuss more in detail, but for now just understand that you have to check whether your solution is correct or not. Then better understand the problem. Are you able to get the problem now? Are you able to see that, okay, yes, these are the 10% of people who will leave the company and these are the reasons why they want to leave the company. Yes, from a machine learning model, you don't only get yes or no, or you don't only get a mathematical output, you can also get to know, suppose you have 100 things, you want to know which are the top 5 things which are responsible for a person leaving the company. So that can be called a feature in a machine learning model. So feature is nothing but the column. So top 5 columns can be obtained by machine learning model. So that can help you understand the problem. Then this cycle can be repeated again. If you want to improve your model, if you get some new data, again this particular cycle can be repeated. So this is all about the working of a machine learning model at start. I hope this much should be enough to begin our journey, and then we go detail one by one more into test data, train data, what are the various ways, what are the various types of machine learning algorithms in future. Now the steps in the process. Collect the data. Firstly, you have to collect and store the data. So data is the most important thing, as I'm saying from my first video, that you need to collect it. You need to see how you want to collect the data. Is it stored somewhere? Do you want to have surveys, experiments? There can be various ways of collecting the data. Then prepare the data. After you have collected the data, you have to prepare it. You have to do some data cleaning. It might happen that you are getting data in different formats. Suppose if somebody is giving data in minutes and another person is giving in hours, so you need to know that one column should have data in one format only. That is a simple example of data cleaning. You don't need to have null values. What is null? Null is just blank values, not having any value in the data. जब डेटा में कोई वैल्यू नहीं होती है तो हमको डेटा की साफ सफाई करनी पड़ती है। जैसे कि जब हम एक नए घर में मूव होते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्लीनिंग करते हैं, राइट। वैसे ही यहाँ पे हमको डेटा की क्लीनिंग करनी होती है। तो पहले डेटा को ढूंढना, घर को ढूंढना, फिर घर की सफाई करनी, फिर घर का प्री प्रोसेसिंग, डेटा का प्री प्रोसेसिंग करना, उस घर में और क्या चीजें चाहिए होगी, इसमें हम क्या ऐड ऑन कर सकते हैं, राइट। जैसे कि आप अगर नए घर में मूव होते हैं, आप देखते हैं आपको फर्नीचर चाहिए, आपको बेड चाहिए, तो वैसे ही यहाँ पे डेटा प्री प्रोसेसिंग, आपको मल्टीपल कॉलम्स को कंबाइन करके एक कॉलम बनाना है, ठीक है। आपको 2 कॉलम का यूज करके, सपोज आपके पास
एक कॉलम है जिसमें आपको एक मंथली बजट दिया है, आपको ईयरली बजट करना है, तो आप उसको 12 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये सिंपल तरीके हो गए डेटा प्रोसेसिंग और डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के, और यही फीचर इंजीनियरिंग भी कहलाता है। फीचर इंजीनियरिंग मतलब जब आप डेटा के साथ खेल रहे हैं, उसी कॉलम का वैल्यू चेंज कर रहे हैं, तो वो एक सिंपल डेटा प्रोसेसिंग है। बट अगर आप उससे कोई एक न्यू कॉलम क्रिएट कर रहे हैं, सो हमेशा याद रखें हम डेटा साइंस में कॉलम को फीचर की तरह बोलेंगे। तो फीचर इज नथिंग बट अ कॉलम और अ particular variable on which you will decide how your data will work. So this is called feature engineering, that is creating a new feature mostly, or maybe transforming a existing feature as well. So transforming a current column as well. तो हम current column को भी change कर सकते हैं. Then choosing a model. This is most important thing. When we start the modeling, which model to use? Supervised learning, unsupervised learning, semi-supervised learning, what to use, or self-supervised learning. And then inside supervised learning also we have 10 basic algorithms. Unsupervised we have 5 to 6 basic algorithms. Then we have deep learning, NLP. Oh my god, what to use, what not to use. That is very important to know. So this is the next step, to use the model. क्या कौन सा मॉडल हमको यूज करना है, किस डेटा पे कौन सा मॉडल वर्क करेगा, ये जानना बहुत जरूरी है। मॉडल सब बने हुए हैं, आपको खाली ये पता होना चाहिए कि ये प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व हो सकती है, राइट। जैसे कि अगर आप खिचड़ी बनाते हैं तो खिचड़ी आपको पता है आपको कुकर में बनाना है, राइट। राइस आपको कुकर में बनाना है, दाल आपको कुकर में बनानी है। वैसे ही कौन सा मॉडल यूज करना है जो आपके डेटा पे वर्क करेगा, वो आपको पता होना चाहिए। आपको कोई नई चीज नहीं करनी है। मॉडल किस तरीके से यूज होता है, कैसे यूज होता है, दैट इज एवरीथिंग इज डिफाइंड। यू जस्ट नीड टू नो विच वन टू यूज एट फर्स्ट। देन आते हैं ट्रेनिंग द मॉडल। सो एज आई सेड, यूज द डेटा विच यू हैव कलेक्टेड टू ट्रेन द मॉडल। तुम उस डेटा से ट्रेन करो अपने मॉडल को। तुम ये देखो कि ये डेटा हमको क्या आउटपुट दे रहा है, इस डेटा से हम क्या वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो ये होता है ट्रेनिंग द मॉडल। Then testing the model, as I said initially, you are testing your model whether you know what are the actual outcomes of that test data and what are you predicting. Then you validate that. Basically you see, okay, I said that say 20 of the 100 employees will leave the company, but actually there are 15 employees which are leaving the company, and 10 I predicted correctly and 10 I predicted incorrect. So I am only 50% accurate. So this testing the model is very important on the test data. And generally what we have, suppose if we have 100 records, what we use is 70 to 30 ratio, that is 70% in training and 30% in test. It can vary also, it can be 80-20 also. So generally these are the two ratios which are being used. So आप अपने डेटा को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, 70% आपका ट्रेनिंग द मॉडल और 30% आपका टेस्टिंग द मॉडल। फिर जब ये बन गया तो इसको हमको डिप्लॉय करना पड़ेगा। डिप्लॉय मतलब किसी चीज को प्रोडक्शन में डाल देना कि वो ऑटोमेटिक वे में चलता रहे, ठीक है। जैसे आपने किसी को सिखा दिया है कि आपको ये चीजें ऐसे करनी है, तो वो अगले दिन खुद से वो चीज वो पढ़ के वो चीज वो कर सकता है। अगर मैं आपको बताता हूँ कि आपको डेटा साइंस में आगे ये करना है, ये एक कोड है और इसी तरीके के 10 कोड और है जो आपको करने हैं, तो मैंने आपको एक कोड सिखा दिया, आप उसी तरह से 10 कोड कर सकते हैं। तो दैट इज व्हाट इज डिप्लॉइंग द मॉडल। एक एनवायरमेंट में हम उस मॉडल को रख देते हैं और वो मॉडल ऑटोमेटिक डेली चलता रहता है। तो आपको मॉडल बनाना है एक बार और वो चलेगा सालों साल। डजंट इट लुक गुड? देन वील सी देयर आर वेरियस वेज। आप इस मॉडल को बार बार चेंज भी कर सकते हैं, सेम मॉडल यूज कर सकते हैं। दैट ऑल विल डिस्कस इन फ्यूचर, बट यस, डिप्लॉइंग अ मॉडल इज basically placing your model somewhere so that it can automatically run in the future. That is what is deploying the model. And prediction can be used in decision making and other applications. Now, machine learning is the baby learning to speak. You all who are parents, they would be knowing that they teach their children how to speak. They gradually learn in 1 year, 2 year, 3 year, what should we speak, what not to speak. These days language is a very good example that the kids of this generation are learning English language first. We used to learn maybe our mother tongue first. So that is very similar to learning in a machine learning and a baby learning to speak. So this is just an analogy for you to understand more clearly. Now coming to what are the different applications. So applications, we have finance and banking, that is detecting the credit card fraud is an approach of anomaly detection. हम ये जान सकते हैं कि किसने फ्रॉड किया है, किसने फ्रॉड नहीं किया है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। दूसरा कस्टमर रिलेशन, किसको हमको एक प्रोडक्ट बेचना है, तो हम बैंकिंग में ये जान सकते हैं हम किस पर्टिकुलर पर्सन को टारगेट कर सकते हैं लोन बेचने के लिए। ये हम कर सकते हैं क्लस्टरिंग मेथड से, के मीन्स मेथड से, जिसके बारे में हम और डिटेल जानेंगे, बट अभी के लिए आप ये टर्म याद रखिएगा फ्यूचर के लिए, क्लस्टरिंग, के मीन्स।
फिर रिकमेंडेशन सिस्टम, हम किसी को क्या रिकमेंड करते हैं, जैसे मैंने बताया था फ्लिपकार्ट में आपको जो रिकमेंड होता है, नेटफ्लिक्स में आप जो देखते हैं, आपको फ्लिपकार्ट में जो प्रोडक्ट आता है वो आपके सब पास्ट परचेजेस के बेसिस पे आता है। तो हमने ये बोला था ऐसा होता है, बट ऐसा कैसे होता है, वो आपको पास्ट परचेजेस देखता है, आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री देखता है, जिसके बेसिस पे वो आपको रिकमेंड करता है। तो ये हो गए कुछ टॉप एप्लीकेशन जो आज की डेट में डेटा साइंस में एकदम बूम कर रहे हैं, और इसीलिए देयर आर मेनी जॉब्स इन Amazon, Flipkart, in banking industry. There are many companies. I work in JP Morgan. JP Morgan is one of them. Then you have even Indian banks who are using now data science to a very large extent. So these are the top three applications. Then you have bots also. So this is again in a evolving stage कि आप जो रोबोट्स बनाते हैं वो नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग या नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इनसे सीख सकते हैं। न्यूरल नेटवर्क जो कि एक एडवांस मेथड है वो एक बॉट्स में यूज होता है। जैसे मैंने बोला ये अभी एक बहुत ही इनिशियल स्टेज पे है, बट आगे चल के लोग बोल रहे हैं जैसे एक सिंपल फॉर्म फिल करना है या आपको कोई क्वेरी आंसर करना है, तो अब आप देखते हैं कुछ कुछ में एक ऑटोमेटिक चैट विंडो आ जाता है कुछ कुछ साइट्स में। तो वो कैसे हो रहा है, वो ये इंटेलिजेंट बॉट्स के थ्रू हो रहा है। फिर आपको प्रिडिक्शंस करने हैं कि आपके नेक्स्ट क्वार्टर के सेल्स क्या होंगे, व्हाट विल बी योर नेक्स्ट क्वार्टर फ्यूचर्स, दैट कैन बी अगेन डन बाय मशीन लर्निंग। फिर मशीन लर्निंग में देर आर मेनी मॉडल्स विल लर्न, रिग्रेशन मॉडल्स, पॉलिनोमियल रिग्रेशन, रिग्रेशन सपोर्ट वेक्टर मशीन, रैंडम फॉरेस्ट। तो अभी आप ये नाम देख के बिल्कुल डरिए मत, आप बस ये सोच लीजिए जैसे मैंने बोला कि बहुत सारे मॉडल रहेंगे, बट हम बहुत सिंपली उनको सीखेंगे कि कब लीनियर रिग्रेशन यूज करना है, कब रैंडम फॉरेस्ट यूज करना है, कब आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क यूज करना है। तो ये सारे आपके एक बंच हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। ये सारे आपके इसको क्या बोलेंगे, अस्त्र रहेंगे इस लड़ाई में लड़ने के लिए। और ये हम बहुत ही अच्छे से जानेंगे किस अस्त्र का इस्तेमाल कब करना है, व्हेन टू यूज विच वेपन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट विल लर्न अबाउट ईच ऑफ द वेपन, स्पेशली द ones which are used a lot in the industry. So this is all about the applications which we use. Thanks a lot for today's session. Hope you all are enjoying the videos. I have updated my teaching style, not style, but yeah, the documents which I have. So guys, now this is something new for you all. If you all want to have this document, please mention your email ID in the comments below, and also like and subscribe my channel. I will definitely share this PDF deck with you for your future references. Thank you, and let's meet again in our next Saturday video. Thank you everyone.